contains the resolution of the MPC with regard to the policy rate and stance. It also contains announcements and measures which have a bearing on the monetary and regulatory policies. The Monetary Policy Committee resolution is, of course, of interest to a large number of people from various walks of life. It impacts the lives of virtually all citizens of the country. The resolution also provides the rationale and the thought process of the MPC, and therefore is of relevance to businesses, economists, academicians, and the finance world. Apart from these MPC-related announcements, the governor's statement has become an important medium for the Reserve Bank to highlight its priorities on which it would like its regulated entities to focus their energies on. It is an opportunity to point out areas of concern and challenges for the stakeholders to address their attention to. It is an occasion for the Reserve Bank to articulate its views on critical areas of interest. I will continue with this practice of a detailed statement after each MPC committee meeting. Now, before I come to the resolution of the MPC, kindly allow me a moment to reflect on the experience of the flexible inflation targeting framework. You are all aware that this inflation framework was put in place in the year 2016 and it was reviewed in the year 2021. You are all also aware that this is a monumental change in the monetary policy history of our country. And so I thought it fit that I reflect on the experience of the flexible inflation targeting framework. Well, I believe that it has served the Indian economy very well over these years, including the very challenging period since the pandemic. The average inflation has been lower post the introduction of this framework. Moreover, CPI has mostly stayed aligned with the target given under this framework, barring a few occasions of breaching the upper tolerance band since its inception. We in the Reserve Bank and the Monetary Policy Committee will continue to improve the macroeconomic outcomes in the best interest of the economy, using the flexibility which is embedded in the framework, while responding to the evolving growth inflation dynamics. Moreover, we will strive to further refine the building blocks of this framework by making advances in the use of new data, improving nowcasting and forecasting of key macroeconomic variables. We forecast, you are aware, growth, inflation, etc., because this is actually a forward-looking policy. And so we'll continue to do that and develop more robust models. On the regulatory front, I would like to mention, and especially there has been a lot of media attention with regard to some of the proposed regulatory changes pertaining to liquidity coverage ratio, expected credit loss framework for provisioning by banks, the prudential norms governing projects under implementation. We will continue to strengthen, rationalize, and refine the prudential and conduct-related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The interest of the economy demands financial stability and consumer protection. Our mandate in the RBI is to enhance both of them. At the same time, I would like to emphasize that the economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation.
it will be our attempt to strike the right balance, keeping in view the benefits and costs of regulation. I also want to reassure all stakeholders that we will continue with the consultative process which the RBI has been doing over the years in this regulation-making process. The suggestions of the stakeholders are very valuable, and we will continue to give serious consideration to them before taking any major decision. We will also ensure that the implementation of such regulations is smooth. We will give sufficient time for transition, and where regulations have major implications, the implementation will be done in a phased manner. Coming to the global economy, the global economic backdrop remains challenging. The global economy is growing below the historical average, even though high-frequency indicators suggest resilience, along with continued expansion in trade. Progress on global disinflation is stalling, hindered by services price inflation. With receding expectations on the size and pace of rate cuts in the US dollar has strengthened, bond yields have hardened, emerging market economies have witnessed large capital outflows, leading to sharp depreciation of their currencies and tightening of financial conditions. Divergent trajectories of monetary policy across advanced economies, lingering geopolitical tensions, and elevated trade and policy uncertainties have exacerbated financial market volatility. Such an uncertain global environment has posed difficult policy trade-offs for emerging market economies. The Indian economy, though continuing to remain strong and resilient, also did not remain immune to these global headwinds, with the Indian rupee coming under depreciation pressure, as you would have noticed in the recent months. At the Reserve Bank, I would like to assure all of you we have been employing all tools at our disposal to face the multi-pronged challenges. With this backdrop, let me now come to the Monetary Policy Committee resolution. As I mentioned, we met these last 3 days, concluding today. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward-looking, the MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously, again, to continue with the neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now state the rationale for the decision in brief. The MPC noted that inflation has declined, supported by favorable outlook on food and continuing transmission of past monetary policy action. It is expected to further moderate in 2025-26, gradually aligning with the target. The MPC also noted that though growth is expected to recover from the low of Q2 of 2024-25 this year, it is much below that of last year. Last year, you are all aware, it was 8.2%. This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC
to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. And accordingly, the MPC decided to reduce the policy rate, by 25 basis points to 6.25%. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. With this, now I come to the assessment of growth and inflation. First of all, growth. As per the first advanced estimates, real GDP growth for the current year is estimated at 6.4%. The numbers were released by MOSPI recently. This is a softer expansion after a robust 8.2% growth last year. Going forward, economic activity is expected to improve in the coming year. Agricultural activity remains upbeat on the back of healthy reservoir levels and bright Rabi prospects. Manufacturing activity is expected to recover gradually in the second half of this year and beyond. Early corporate results for Q3, and we have more than 50% of the results now as we speak. It indicates a mild recovery in the manufacturing sector. Mining and electricity are rebounding from monsoon-related disruptions in Q2. Business expectations remain upbeat, as evident from the PMI Manufacturing Future Output Index. Services sector activity continues to be resilient. PMI services, however, declined from its recent peak. On the demand side, rural demand continues to be on an uptrend, while urban consumption remains subdued, with high-frequency indicators providing mixed signals. And we are aware we got the Nielsen survey report also just yesterday. Going forward, improving employment conditions, tax relief in the union budget, moderating inflation, together with healthy agricultural activity, bode well for household consumption. Government consumption expenditure is expected to remain modest. Higher capacity utilization levels, robust business expectations, and government policy support augur well for growth in fixed investment. Continued buoyancy in services export will support growth. Global headwinds, however, continue to impact uncertainty to the outlook and pose downward risks. Taking all these factors into consideration, the RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. The risks are evenly balanced. Coming now to inflation, headline inflation, after moving above the upper tolerance band in October, has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening due to good Kharif production, winter easing as we witness every year in the vegetable prices, and a favorable Rabi crop prospect. Core inflation is expected to rise but remain moderate. Rising uncertainty in global financial markets, coupled with continuing volatility in energy prices and adverse weather events, presents upside risks
to the inflation trajectory. Taking all these factors into consideration, CPI inflation for the current financial year is projected at 4.8%, with Q4, the current quarter, at 4.4%. Assuming a normal monsoon, CPI inflation for the financial year 2025-26 next year is projected at 4.2%, with Q1 at 4.5%, Q2 at 4%, Q3 at 3.8%, and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. I will now come to the external sector. The India's current account deficit moderated from 1.3% of GDP in Q2 of last year to 1.2% in Q2 of this year, 24-25. According to the World Bank, India, with an estimated inflow of $129.1 billion US, continues to remain the largest recipient of remittances globally last calendar year 2024. The current account deficit for this year is expected to remain well within the sustainable level. As on 31st January this year, I may inform you, India's foreign exchange reserves stood at 630 plus billion US dollars. This provides us an import cover of more than 10 months. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators stay robust. I would like to mention over here, and especially because there has been commentary in the media about the Reserve Bank's exchange policy. Well, the Reserve Bank's exchange rate policy over the years has remained very, very consistent. Our stated objective is to maintain orderliness and stability without compromising market efficiency. The Reserve Bank believes in the market efficiency of the markets that we have in India for Forex. Accordingly, our interventions in the Forex market focus on smoothing excessive and disruptive volatility. It does not target any specific exchange rate level or band. The exchange rate of the Indian rupee is determined by market forces, and we will continue with this policy. Coming now to liquidity and financial market conditions, I may state that after remaining in surplus from July to November 2024, system liquidity as measured by the average net position under the liquidity adjustment facility did turn into a deficit during December 2024 and January 2025. This drainage of liquidity is mainly attributed to advanced tax payments in December 2024. You are aware there are quarterly advanced tax payments to be made, December being that particular month. For the advanced tax payments for Q3, that did have an impact. Capital outflows, again, one has witnessed some capital outflows because of various reasons. Forex operations, and a significant pickup in currency in circulation as we witness every year in January. It has been, however, I would like to mention over here that we have observed that some banks are reluctant to on-lend in the uncollateralized call money market. They are passively parking funds with the Reserve Bank. I take this opportunity to all the banks to urge them to actively trade amongst themselves in this uncollateralized call money market, so as to make it deeper and vibrant for better signal extraction from the weighted average call money rate. The Reserve Bank is committed. I want to assure everyone that the Reserve Bank is committed to provide sufficient system liquidity. We have taken a number of steps in this regard, and we will continue to monitor the evolving liquidity and financial market conditions and proactively take appropriate measures
I repeat, proactively take appropriate measures to ensure orderly liquidity conditions as may be required for the system. And when I say liquidity, it means not only transit overnight liquidity, but also durable liquidity to meet the requirements of the system. I now come to financial stability. The system-level financial parameters for the scheduled commercial banks continue to be healthy. The credit-deposit ratio for the banking system at the end of January 2025 was at 80.8%, broadly similar to that on 30th September 2024. Bank liquidity buffers are sufficient, though the net interest margin moderated, return on assets and return on equity are robust. The system-level parameters for NBFCs too are very healthy. I also take this opportunity today to mention that the Reserve Bank has been observing Financial Literacy Week annually since 2016. This is with the purpose to enhance financial education in our country. Last year too, we did this campaign. This campaign was focused last year on empowering youth adults. This year, recognizing the critical and multifaceted role of women in society, this campaign will emphasize on women's role in financial decision-making and household budgeting. I sincerely urge all banks to actively participate in this campaign on the theme Financial Literacy, Women's Prosperity. It starts from 24th of this month. Now, before I conclude, I shall be announcing some additional measures. Necessary directions and circulars for these shall be issued separately. First of all, on digital security, the rapid digitalization of financial services has brought convenience to all of us, at the same time efficiency, but it has also increased exposure to cyber threats and digital risks, which are again getting sophisticated day by day. The surge in digital frauds is a matter of concern. It warrants action by all stakeholders. The Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. Introduction of additional factor of authentication for digital payments is one such measure. It is now proposed to extend this to online international digital payments made to offshore merchants who are enabled for such authentication. Second, the Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. The banks and NBFCs, I would urge them to also continuously improve preventive and detective controls to mitigate cyber risks. They must develop robust incident response and recovery mechanisms, reinforced through periodic testing for operational resilience. Third measure that I am announcing today, over the past few years, we have expanded the suite of interest rate derivative products available to market participants to manage their interest rate risks. We shall now, to this suite, include forward contracts in government securities. This would facilitate long-term investors, such as insurance funds, to manage their interest rate risk across interest rate cycles. It will also enable efficient pricing of derivatives that use government securities as underlying instruments. Fourth, to enhance access of retail investors to government securities,
The Reserve Bank has taken a number of steps earlier. There's another step, that I am announcing today, and this pertains to expanding the access of NDS Home, our platform for trading in this, the secondary market transactions for government securities, to non-bank brokers who are registered with SEBI. A number of them are registered with SEBI. They will also get an opportunity now to participate and trade through the NDS Home, the electronic trading platform of RBI for government securities. Fifth, in view of the various developments in financial markets and market infrastructure over the past few years, we shall be setting up a working group with representation from various stakeholders to undertake a comprehensive review of trading and settlement timing of markets regulated by the Reserve Bank. There are some 5 such markets which have different timings. The group shall submit its report by 30th April this year. To conclude, considering the existing growth inflation dynamics, the MPC, as I mentioned earlier, while continuing with the neutral stance, felt that a less restrictive monetary policy is more appropriate at this current juncture. The MPC will take a decision in each of its future meetings based on a fresh assessment of the macroeconomic outlook. We are committed to conduct monetary policy and take such measures as appropriate, which are timely, carefully calibrated, and clearly communicated to facilitate conducive macroeconomic conditions that reinforce price stability, sustained economic growth, and financial stability. Thank you, Namaskar, and Jai Hind. चलिए, तो बिल्कुल उम्मीद मुताबिक जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हूबहू वही आरबीआई के नए गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी ने ऐलान किया है। आपके सामने टॉप जो खबरें हैं फटाफट रख देते हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट 1/4% की कटौती की है। अब इसके साथ जो ब्याज दर है वो 6.5% से घटाकर 6.25% पर आ गई हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेट कट के पक्ष में वोट किया है और वही आज की पॉलिसी में होता हुआ दिखाई दिया है। स्टैंस की अगर बात करें तो पॉलिसी रुख न्यूट्रल पर बरकरार रखा गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इस एमपीसी से निकल कर आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं का जो रिस्क है वो अभी भी भारत की इकोनॉमी पर बना हुआ है, उसे सिरे से नकार नहीं सकते। लेकिन जीडीपी ग्रोथ अनुमान पर जरा नजर डालिए, 6.7% वित्त वर्ष 2026 के लिए, और जो सीपीआई का अनुमान है वो यहां पर 4.2% के पास रखा गया है। फूड इन्फ्लेशन में ये एक पॉजिटिव बात निकल कर आई कि फूड इन्फ्लेशन जो है, खाने पीने की महंगाई है, वो यहां से घटती हुई नजर आएगी क्योंकि खरीफ का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है और आगे रबी के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी यहां पर बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आइए, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, हूबहू वैसी ही पॉलिसी आई जैसे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे, 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है और एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेट कट किया है। न्यूट्रल स्टैंस यहां पर बरकरार रखा है। मैं आपको बाजार का हाल बता देती हूं। एक स्पाइक जरूर यहां देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद अब डेज लो पर आ गया। 23,528 के पास निफ्टी है और बैंक निफ्टी 250 अंक गिरकर 50,125 के पास है। जी, तो नेहा, बिल्कुल पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक रही है और अनुमान था ही बाजार का कि एक रेट कट मिलेगा। रेट कट में अच्छी बात है कि सर्वसम्मति से 6.5 के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने इस रेट कट कहा है कि कल चाहिए। आगे के लिए पॉलिसी न्यूट्रल है, वो भी एक अच्छा संकेत है कि जिस तरह के डेटा और जिस तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े आगे नजर आए, आगे एक्शन लेगा। तो पॉलिसी इन लाइन उम्मीद मुताबिक है। न कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज है, नहीं कोई बड़ा ऐसा आप ये कहें कि शॉक है, न पॉलिसी के लिहाज और पॉलिसी के लिहाज से जो गवर्नर साहब वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। रहा सवाल बाजार का, तो जाहिर सी बात है कि बाजार में एक्शन थोड़ा सा म्यूटेड है। सुबह हम बात कर भी रहे थे कि हो सकता है रेट कट के बाद भी थोड़ी सी आपको प्रॉफिट आती हुई दिखे, क्योंकि दोनों तरह से है। होने का मतलब ये कमजोर होगी और थोड़ा नाराजी चल रहे हैं करेंसी होने से, उन्हें लगता है प्रॉफिट जा रहा है, तो उनकी तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वाली लिए वो रह ही सकती है। दूसरा सवाल बैंक निफ्टी
तो ऑलरेडी उससे पहले तक ज्यादा मजबूत रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आने की संभावना भी रहती है। लेकिन अब आपको अप्रोच आपको कैसे करना है, पॉलिसी न्यूट्रल से हल्की सी पॉजिटिव माइंड बाजार के लिए, ऐसा कुछ नहीं जिससे बाजार टूट जाए और ऐसा अनएक्सपेक्टेड जिससे बहुत ज्यादा भाग जाए। तो अल्टीमेटली वो बात वही है कि आगे एफआई का रुझान कैसे रहता है। जहाँ तक आज पॉलिसी के बाद का सवाल है, 50,000 के नीचे ट्रेड करने के निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा आपको कमी के संकेत देगा और 50,000 के पार निकलकर टिकने के बाद आपको बैंक निफ्टी में और मजबूती बनती हुई दिखेगी। जहाँ तक सवाल निफ्टी का है, तो निफ्टी के लिए वही रेंज है नीचे की तरफ 23,400 के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर आप 23,000 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग होती नजर आएगी। तो रेंज पर नजर रखें। बेहतर है कि आज बाजार को वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा रहने दें। आप इंतजार करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे बाजार रेंज के एक तरफ निकलकर फोर्थ पर बंद होने की कोशिश करता है, बट ओवरऑल पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक आप ये मानकर चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टेक देने के लिए। तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर पॉलिसी देखने को मिले, लेकिन हमारे जितने मेहमान हैं, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। भगत सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि नए गवर्नर साहब की पहली पॉलिसी थी, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? किन किन पॉइंट्स पे या एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे? क्या वो सब हुआ जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे? जी नेहा जी, सब हुआ। एक चीज में मायूसी है, महात्मा गांधी का कोट नहीं आया, क्योंकि मैं किताब लिख रहा था, शक्तिकांत दास जी हर वक्त महात्मा गांधी को कोट करते हैं, वो नहीं आया, तो थोड़ी मायूसी जरूर है। तो बाकी आई थिंक तभी मार्केट गिर रहा है। बट ओवरऑल देखें तो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो बहुत सुदृढ़ है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने 6.3% से 6.5 की बात की थी, इनका 6.7 है अगले साल के लिए। तो आरबीआई ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इकोनॉमिक सर्वे से, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन में कटौती है, हमारा सोच था कि लगभग 4.2 से 4.5 के बीच में आएगा। अगले साल का आंकड़ा 4.2 पे आया, बिल्कुल खरा आया। करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। रेमिटेंसेस की बात की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो बताता है कि बैंक्स का लेंडिंग कैपेसिटी अच्छा चल रहा है, 80% के करीब चल रहा है। ग्लोबल संकेत पे भी उन्होंने बातचीत करी और रुपए पे भी जो आरबीआई का ऑफिशियल स्टैंस रहता है वही उन्होंने कहा। एक जो थोड़ा सा मुझे सरप्राइज था कि पॉलिसी न्यूट्रल रखी गई। क्या होता है जब रेट कट आता है, पहले आप रिस्ट्रिक्टिव रहते हैं पॉलिसी, फिर एक आध बारी न्यूट्रल रख के फिर अकोमोडेटिव की तरफ पहुंच जाते हैं। अब आप रेट कट तो शुरू कर दिए हैं और लिक्विडिटी भी आप डाल रहे हैं मार्केट में, बट पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल रख रहे हैं, ये थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट क्यों गिरा? मार्केट क्योंकि पोजीशंस पहले बन गई थी, तो सेल ऑन रूमर या बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट हो गया। आज बुक हो रही है पोजीशन। इसमें कुछ ज्यादा सोच नहीं करनी है कि मार्केट क्यों गिरा, ये क्योंकि डिस्काउंटेड था और भारी गिरता अगर रेट कट नहीं आता, बट क्योंकि डिस्काउंटेड था आज बुकिंग हो रही है। ये समतल हो जाएगा थोड़ी देर में। मार्केट के लिए अच्छा है क्या? हाँ, जो भी होलसेल बोरोअर्स हैं, एनबीएफसीज वगैरह, उनकी कीमत इमीडिएटली उनको इम्पैक्ट आता है। और दूसरा है कि बैंक्स का जो एसएलआर होल्डिंग है उसके लिए उनको ट्रेजरी गेन्स आते हैं। यील्ड्स जरूर नीचे जाने चाहिए। अगेन काफी हद तक डिस्काउंटेड था मार्केट में, तो आज इतना शार्प मूवमेंट नहीं दिखेगा। तीसरा है कि यहाँ से आरबीआई चल पड़ा, यूनानिमस था, ऐसा नहीं था कि कोई डिसेंटिंग वॉइस थी। आरबीआई ने शुरुआत कर दी है रेट कट की और मेरी निजी सोच यही है नेहा जी, और 3 रेट कट आ जाएंगे इस साल के अंदर, जनवरी से दिसंबर के बीच में। तो ये शुरुआती पैंतरा है, यहाँ से 3 और रेट कट आने की मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, तो यहाँ से 3 रेट कट और देखने को मिल सकते हैं और बाकी जो पॉलिसी आई, जो कमेंट्री आई है, वो अनुमान के मुताबिक, थोड़ा स्टैंस को थोड़ा स्टडी करना होगा यहाँ पर, लेकिन मार्केट का रिएक्शन भी अनुमान के मुताबिक ही इस बीच नजर आ रहा है। हमारे साथ पैनल पर अजय कंवल जी भी जुड़ चुके हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पॉलिसी पर पहला तो आपका रिएक्शन कैसी लगी आपको? पॉलिसी के एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही थी, और एक और चीज जिन्होंने बैंकों को भी कहा कि आप
आप ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कदम उठाइए, थोड़ा वहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो आपका क्या मानना है, ये रेट कट का कितना इम्पैक्ट है, और जो बैंकों को ये सलाह दी गई है उस पर क्या लग रहा है आपको? बैंक तो पहले से ही तैयारी कर ही रहे थे, अब इसके बाद और क्या कुछ सिस्टम में करने की ज़रूरत है? राइट, सो पहले तो बहुत जरूरी है कि उन्होंने इम्पोर्टेंटली बोला कि इन्फ्लेशन फ्लेक्सिबल टारगेटिंग करेंगे। राइट, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग चेंज। कोई एक नंबर पकड़ के नहीं चलेंगे, बट बैलेंस करेंगे। अगर ग्रोथ में चाहिए जरूरत कट के लिए और इन्फ्लेशन उस लेवल पे नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम रेट कट करेंगे। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी strategic change, if you ask me, and I think the most important change in the MPC. Of course, 25 basis point कट गया तो अच्छी बात है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है. And I think stance remaining neutral is also probably reflecting what is happening globally. जो tariffs चल रहा है, rupee depreciation है. It is possible that we may induce inflation without realizing in the next few months. वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो सकता है, इसलिए being watchful and being careful I think is the right answer also. So neutral stance भी मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल वजह से ही है, and rightly so till everything settles down and there is a lot of volatility in the global markets for sure. अभी टैरिफ वॉर तो अभी स्टार्ट ही हुई है. So I think all in all, given all the parameters, I think the biggest change has been balancing growth and inflation, and that change in the stance I think is the most strategic reason of for us to be delighted in this one. I do think there is still tightness in the system on liquidity, which is why he mentioned कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हम liquidity और help करेंगे. I think that will be a continuous effort, and I think that is what we should hope to see. On digital, see the challenge, ma'am, is that सब लगे हुए हैं to tighten this whole process of कैसे हमारे customers किसी के बहकावे में आगे अपना अकाउंट नंबर पिन शेयर ना कर दें. अनफॉर्चुनेटली अदर साइड पे जो इंडस्ट्री है जो ये फ्रॉड करती है, उनके भी मेथड चेंज होते जा रहे हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर कस्टमर एजुकेशन. देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू टू मेक श्योर दैट वी आर टाइटर ऑन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग. वी आर इवन क्विकर टू रिस्पॉन्ड. एंड व्हाट विल हैपन इन दिस इज, जैसे कस्टमर के ट्रांजैक्शन अकाउंट में हो रहे हैं, आपको पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपका फर्स्ट मन है कि मैं ब्लॉक कर देता हूं. तो हो सकता है कुछ अच्छे कस्टमर्स को भी इंपैक्ट आ सकता है कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. वी कैन सी दैट जो फ्रॉड करने वाले बहुत नए नए रास्ते ला रहे हैं. दे आर रियली टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरियस एंगल्स टू हाउ टू कन्विंस पीपल टू शेयर देयर पिन्स एंड पासवर्ड्स. वी सी दैट इंसिडेंट नॉट गोइंग डाउन. सो आई थिंक व्हाट द गवर्नर हैज पॉइंटेड आउट, ऑल ऑफ अस हैव टू बिकम मोर अलर्ट. हम लोग भी बहुत ही रेगुलरली रिव्यू कर दिया. इतना पहले कभी रिव्यू नहीं करते थे कि हमारे क्या क्या रूल्स हैं, कैसे टाइट किया जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए. बट देयर इज वर्क टू डू फॉर ऑल बैंक्स, एंड सर्टनली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस एवरीबडी शुड कम टुगेदर. मुझे लगता है कि टेलकोस को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज एक बहुत जरूरी जो मीडियम है जो कस्टमर तक जाता है, ये कॉल, SMS जाते हैं, लिंक जाते हैं, वो टेलकोस के थ्रू जाते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर अस टू बी अ बिट मोर टुगेदर, not just banks. सर फिर अब अगला सवाल तो ये होगा, फिर तब ये बैंकों की तरफ से ट्रांसमिशन कब तक शुरू होगा? क्योंकि CRR में कटौती हो चुकी है, OMO ऑपरेशन के जरिए भी लिक्विडिटी लाने की कोशिश की, और ये रेट कट और थोड़ा सपोर्ट ही करेगा इस चीज को. तो अब बैंकों की तरफ से कब शुरुआत होगी? आने वाले समय में इसको कब तक आप कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे? तो देखिए, लोन साइड में तो काफी सिंपलिस्टिक है. जहां फ्लोटिंग रेट है वहां तो डायरेक्टली हो जाएगा, कैसे रिकैलकुलेट होगा. आई थिंक मुझे नहीं लगता लिक्विडिटी इतनी मार्केट में इजी है कि डिपॉजिट रेट इतने जल्दी जल्दी कट जाएंगे. हो सकता है थोड़े से कटे, पर ज्यादा जल्दी कटने का मुझे और ज्यादा कटने का भी चांस कम दिखता है अभी. बट लेट्स सी, अगर लिक्विडिटी और बढ़ जाए देन आई थिंक बैंक्स विल मूव टुवर्ड दैट साइड. पर अदरवाइज बैंक्स आर वेरी स्टैटिक, वेरी स्टेबल आंसर, राइट. अगर आपका लिंक्ड है बेंचमार्क से, बेंचमार्क नीचे आया तो आपका रेट कम हो जाएगा, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता. यहाँ पर भी नजर रहेगी. लेकिन गुरमीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा था कि आप देखना चाहेंगे ग्रोथ पर थोड़ा फोकस यहाँ
करना चाहेंगे। आपको कैसा लगा, कैसी लगी ये पॉलिसी, और अब क्या प्लान है मार्केट में? क्या खरीदना चाहेंगे या क्या होल्ड करना चाहेंगे, किससे निकलना चाहेंगे? तो मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक जो ग्रोथ का एस्टिमेट दिया, एक तो यूनानिमस रेट कट हुआ, जैसे अजय जी ने बोला कि आरबीआई ने एक टोन सेट किया है कि हम करेंसी पे प्रेशर था, कहीं कई जगह से आवाज़ आ रही थी कि अभी शायद पॉज करेंगे, बट आई थिंक, और उन्होंने एक ट्रेड ऑफ की बात करी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की और एफिशिएंसी इन इकोनॉमी की। तो ग्रोथ पे थोड़ा फोकस बढ़ा है, यूनानिमस था, तो आई थिंक ये टोन बहुत पॉजिटिव थी। आई थिंक ये मीडियम टर्म के लिए, बाज़ार के लिए भी अच्छा है, इकनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं ये मानता रहा हूँ कि इंडिया अगर 8% से कम ग्रो करता है तो हम अंडर अचीव करते हैं अपना पोटेंशियल। सेकंड, उन्होंने एक जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा बढ़ाया 6.7। मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड में थोड़ा सा इसमें भी अपसाइड आएगी, क्योंकि अपटिक हुआ है, और आप जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आएंगे, आपने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखी अभी 57.7 6 मंथ हाई पे आई है, जीएसटी का नंबर अच्छा आया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस से पिकअप हुई है, अभी न्यू इनकम टैक्स बिल भी टेबल हो जाएगा अगले हफ्ते, तो मुझे लगता है जीडीपी का भी आंकड़ा अपसाइड में थोड़ा जो है आई थिंक सरप्राइज करेगा। तीसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सचेंज रेट हमारा मार्केट डिटरमाइंड फोर्सेस है, आरबीआई एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये एक अच्छा मैसेज देगा बाजार को। उनका काम सिर्फ ऑर्डरली मूवमेंट है, और कोई अगर डिस्ट्रप्शन होता है उसको टैकल करना है, एक्सचेंज का कोई रेट का कोई टारगेट नहीं है। आई थिंक ये स्पेल आउट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रुपी को लेके एक कंसर्न ये रहा है कि एफपीआई जो बेच रहे हैं वो महंगा रुपी बेच रहे हैं, उनको लगता है कि रुपी को और डिप्रिशिएट होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये अच्छा रहा। और एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली कि कोई भी जो चेंजेस करेंगे रेगुलेटरी, वो थोड़ा फेस मैनर में करेंगे। पीछे हमने देखा कि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया आरबीआई ने, बहुत सारी लोन कैटेगरीज पे बहुत सारे एक्शंस लिए, बहुत सारी एनबीएफसीज और बैंक्स पे बहुत सारे चेंजेस किए रिस्क वेट्स पे। उन्होंने बात की कि ये फेस मैनर में किया जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन ना हो और स्मूथनेस बनी रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छा टोन था, ओवरऑल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा था पॉलिसी का, और मुझे लगता है ये बाजार के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। नियर टर्म में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा है एफआईएस का, वो कहना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक डायरेक्शन सेट हो गया है, और मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। एक मैं शायद चाहता था कि थोड़ा सीआरआर करके थोड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पे कोई बात हो, पर ठीक है, वो आउटसाइड द पॉलिसी भी हो सकता है, उसका हम वेट करेंगे। मे बी वो देखना चाहते हैं कि फरवरी और मार्च में एडवांस टैक्स और बाकी चीज़ों से क्या टाइटनेस आती है, और फिर शायद आपको और एक्शन दिखेगा पॉलिसी के बाहर भी। चलिए अतुल जोशी सर, अब मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। आपने कहा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आगे जाके मिल सकते हैं, इन्होंने तो रेट कट यहाँ पर सामने कर दिया। ठीक है, जोशी सर से मैं सवाल लूंगी, लेकिन भगत सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा वो जो स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, गुरमीत यंग हैं, पंजाबी हैं, स्क्वॉश अच्छा खेलते हैं, जो भी ये कहते हैं मैं उसको बिल्कुल सहमत रहता हूँ। बिल्कुल नोटेड सर, चड्ढा सर ने भी आपको सुन लिया है। अच्छा जोशी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अभी जब आप कह रहे थे कि ये जो जीडीपी का स्लो डाउन है, करेंसी की वीकनेस, बहुत सारे आपने कहा था कि चीज़ों को यहाँ बैलेंस आउट करके इन्हें एक पॉलिसी निकालनी होगी। आपको ये पॉलिसी, गवर्नर साहब की पहली पॉलिसी कैसी लगी? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको लगता है कि थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है? क्योंकि उन्होंने कहा कि रूरल डिमांड यहाँ से रोबास्ट दिख रही है, लेकिन अर्बन डिमांड को लेकर दिक्कतें हैं। आगे भी कहा है, और उन्होंने रिपीट कहा कि हम प्रोएक्टिवली जहाँ जहाँ लिक्विडिटी इंजेक्शन की ज़रूरत होगी उस पर फोकस करेंगे। आपको क्या हाईलाइट्स दिखाई दी और आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? देखिए, मैं कह रहा था कि दो चीजें जो प्रीवियस गवर्नर ने इस गाइडलाइन रखी थी, पहली थी ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, जो इन्होंने रिपीट कर दिया। तो वो एक फ्रेमवर्क जो आरबीआई प्रीवियस गवर्नर ने कहा था, इन्होंने वो कंटिन्यू रखा। और दूसरा था प्रूडेंट एंड कॉशियस अप्रोच। तो वो तो उनकी स्पीच में दिख ही रहा है कि प्रूडेंट एंड कॉशियस अप्रोच रहेगा, फॉरवर्ड लुकिंग भी रहेगा। लेकिन समवेयर ड्यूरिंग द स्पीच उन्होंने ये कह दिया कि वी आर सपोर्टिंग ग्रोथ व्हाइल अलाइनिंग इन्फ्लेशन। तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ की कंसर्न है वो थोड़ी ज्यादा दिख रही है। प्रीवियस गवर्नर ने जो लास्ट आरबीआई पॉलिसी थी दिसंबर में, उन्होंने जीडीपी का आंकड़ा 24-25 के लिए 6.6% रखा था। इन्होंने वो घटाकर 6.4% कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आरबीआई का अनुमान है, उन्होंने ये कहा ये मॉस्पी का है। तो समवेयर मेरे ख्याल से उनके जो भी पॉलिसी डिस्कशंस हो रहे हैं, जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो जीडीपी स्लो डाउन की तरफ
ज्यादा मेरे ख्याल से ढल रहे हैं। जो कि उनका अनुमान है 6.7%, वो थोड़ा अपर एंड ऑफ इवन फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 6.3 और 6.8 कहा था, इन्होंने 6.7 किया। तो मेरे ख्याल से समवेयर इंटरनली एक जीडीपी स्लो डाउन की तरफ एक अनुमान विद इन आरबीआई चल रहा है, जो कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई ने 4% के नीचे, इन्फ्लेशन का जो एक आंकड़ा है Q3 25 के लिए 26 के लिए, वो 3.8% किया है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि सीपीआई काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि वी विल हैव, मतलब हमारी ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की फियर्स है वो आरबीआई के दिमाग में नहीं है। आरबीआई ये सोच रहा है कि वो एक मैनेजेबल सिचुएशन है। तो रुपी डेप्रिसिएशन हो, क्रूड प्राइसेस हो, टैरिफ वॉर हो, वो सारी की सारी जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं वो सीपीआई को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, ऐसा उनका स्ट्रांगली मानना दिख रहा है। तो ये मेरे ख्याल से हमको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और शायद यही रीजन है कि उन्होंने जो मैं सोच रहा था कि रेट कट नहीं करेंगे, पॉलिसी स्ट्रांग बताएंगे कि रेट कट होगा, इन्होंने उल्टा कर दिया, रेट कट कर दिया है लेकिन न्यूट्रल स्टांस रखा है और काफी सारी बातें कही है ग्लोबल रिस्क के बारे में। तो लेट्स सी कैसे वो इवॉल्व होते हैं। मेरे ख्याल से वी विल हैव टू थोड़ा एक और उनको 1-2 पॉलिसी तक देखना पड़ेगा कि उनकी सोच कैसे इमर्ज रही है। बाकी न्यूट्रल स्टैंस और मेरे ख्याल से न्यूट्रल स्पीच रही है। मार्केट को सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखते हैं कि मार्च के बाद कैसे आता है। तो ग्रोथ फोकस्ड थोड़ी पॉलिसी इस बार नजर आई, कमेंट्री भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही थी। महेंद्र जी, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे पॉलिसी में। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर नोटिस किया और सब पैनल को भी आपने सुना, कि आपको भी लग रहा है कि अब इसके बाद ब्याज दरों में जो कटौती है वो आने वाले समय में थोड़ी और फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, पॉलिसी में जो स्टेटमेंट है उससे एक चीज तो बहुत साफ है कि ये रेट कट साइकिल की स्टार्ट है और इसके आगे हमको और मेजर्स देखने मिलेंगे। अजय जी ने भी बोला कि एक्यूमुलेटिव 100 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट का अभी तक व्यू था 50 बेसिस पॉइंट्स तक कट जाएंगे और शायद वो मार्केट में एक्सटेंड होगा। और पॉलिसी स्टांस को उन्होंने न्यूट्रल रखा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनिश्चितता है और हमको पता है कि टैरिफ वॉर्स वगैरह, तो कल 3 महीने में क्या सिचुएशन होगी वो अभी बताना मुश्किल है। तो इस माहौल में जल्दीबाजी करके आप स्टांस को अकोमोडेटिव करें और फिर ग्लोबल इवेंट्स रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हो, उसके लिए हमें पॉलिसी मेजर्स लेने पड़े। तो एक बहुत आई थिंक दूरदर्शी समझदारी वाला उन्होंने स्टांस लिया। बट जो ओवरऑल अप्रोच है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ के बारे में बहुत ऑप्टिमिज्म है, बट जो हमारा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पिछले 4 सालों में इकोनॉमी गवर्नमेंट कैपेक्स के बल पे चल रही थी। अभी आपका फिस्कल डेफिसिट 6 से 4.5% हो गया, जो कि 33% कॉन्ट्रैक्शन है, और वो इस समय में हो रहा है जबकि हमने पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी 5.4% ग्रोथ देखा और एवरीवन जो है वो अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल कंट्रैक्शन रिसेशनरी होने ही वाला है और उसको काउंटर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए। तो यदि हम 6.7% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमको ये भी मान के चलना होगा कि एक बहुत ही सपोर्टिव इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा। दूसरी चीज जो मार्केट को मेरे ख्याल से आगे चल के सपोर्ट करेगी, देखिए पिछले साल हमको इंडेक्स में इंक्लूजन के कारण काफी स्ट्रॉन्ग एफआईआई फ्लो मिले डेट में। इस साल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इंडेक्स वाले, उनके पोर्टफोलियो बैलेंस हो गए, अब इंक्रीमेंटली उसमें फ्लो नहीं आने वाले हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को इस साल काफी बड़ी मात्रा में ओएमओ परचेजेस करने पड़ेंगे। तो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, हमने जो बॉन्ड मैथ किया उसके हिसाब से आरबीआई को इस साल 2 से 3 लाख करोड़ के ओएमओ परचेजेस करने पड़ेंगे। 60,000 उन्होंने ऑलरेडी कर लिया और 30,000 करीब उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में बाइंग कर लिए। तो अभी आगे चल के आपको 2 से 2.5 लाख करोड़ के ओएमओ परचेजेस होने चाहिए यदि आपको लिक्विडिटी को मैनेज करना है। गवर्नर साहब ने अपने स्पीच में बहुत क्लियरली बोला कि जो उनका लिक्विडिटी मेजर्स है वो खाली रेपो और उसमें नहीं रहेगा, वो ड्यूरेबल लिक्विडिटी भी इंजेक्ट करेंगे। आज के डेट में गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेज बहुत ज्यादा है और हमको रुपी पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है। सो
एक असेसमेंट फेयर कि कितना ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा, बट डायरेक्शनली बहुत क्लियर है कि ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत है। सो देयरफॉर सेकंड पॉइंट इज कि ओमो हमको कंसिस्टेंटली इस साल देखने मिलेंगे। शायद इसीलिए इस बार पहली बार बजट में गवर्नमेंट बॉन्ड स्विच का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आरबीआई के जितने करीब 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इस साल मैच्योर होते हैं वो शायद वो सेकेंडरी मार्केट से रिप्लेस करेंगे, इसलिए हमने ओमो विंडो पे भी उनके परचेजेस देखे। तो आप यदि ग्लोबल अनसर्टेनिटी फैक्टर को निकाल दो तो भारत के लिए रेट कट्स जरूरत है, सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है, और वैसा ही अप्रोच आज हमें पॉलिसी में देखने को मिला। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो इस समय चल रहा है वो मुझे लगता है भारत के फेवर में जाएगा, क्योंकि भारत और मजबूत होकर उभरेगा। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिए जो प्रोटेक्टिव और प्रीएम्प्टिव कॉशनरी मेजर गवर्नर साहब ने बताया, फॉर इंस्टेंस कि पॉलिसी का रुख उन्होंने न्यूट्रल ही रखा, तो वो भी एक बहुत आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है विच गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी कि यदि सो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट यदि स्टेबल टू न्यूट्रल रहता है जी सर, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सपोर्टिव है। बिल्कुल सही, बहुत ही वैलिड फैक्टर आपने यहाँ पर रेज किया, और क्लियरली गवर्नर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी प्रोएक्टिवली आरबीआई इसका संज्ञान लेगा और हर माध्यम से लिक्विडिटी है वो पर्याप्त बनी रहे सिस्टम में, इस पे वो ध्यान देंगे। अच्छा भगत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे मार्केट्स के लिए ठीक है ये एक पॉलिसी आ गई, लेकिन जो एफआईआईज की बिकवाली है वो एक बड़ा सरदर्द रहा है। बजट के बाद भी हमने देखा है कि कहीं भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचे हैं जहां तक सेल्स का सवाल है। एक पॉलिसी हमारे सामने एक बड़ा ट्रिगर थी। अब इस पॉलिसी के बाद क्या लगता है सर, क्योंकि रुपी को अगर ये मार्केट फोर्सेस के लिहाज से कोर्स ऑफ करेक्शन होने देते हैं, क्योंकि हमारा रुपया यहाँ कमजोर नहीं हो रहा है, इंडेक्स डॉलर इंडेक्स यहाँ पर मजबूत हो रहा है, इस पॉलिसी के बाद एफआईआईज का क्या स्टैंड होगा? अभी तक तो नेहा जी देखें, अगर 1 जनवरी से पिछले हफ्ते तक देखें, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में $150 बिलियन डाले गए हैं, तो फ्लोज जा रहे हैं अमेरिका के अंदर और वो जारी रहेगा। ये अगेन हमारा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, अमेरिका का एक्सेप्शनलिज्म है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मार्केट। और अगर देखें टेक्नोलॉजी शेयर डाउन है अमेरिका में, बट बाकी 10/11 सेक्टर अप है। उसका रसल 2000 स्मॉल मिड कैप इंडेक्स 4% अप है जनवरी से अभी तक। तो 150 बिलियन जो उधर जा रहा है वही ये इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल के जा रहा है, वो तो अभी एकदम तो बदलेगा नहीं। क्या इसमें बदलाव आएगा? जो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़े बढ़ रहे हैं, जुलाई तक उनको उम्मीद है मैन्युफैक्चरिंग में भी एक उछाल आएगा। मार्केट 3 से 6 महीने पहले मूव करता है स्टॉक मार्केट, तो जैसे ही आपको दिखेगा कि अर्निंग्स में एक बेटर हमें दिख रहा है अंडरलाइन, तब ये एफआई का रिवर्सल आएगा, नहीं तो तब तक हमें इसके साथ जूझना पड़ेगा। रुपया जो है वो रहेगा। आप चाइनीज युआन को देखिए, जब चाइनीज डेप्रिशिएट करेंगे 2018 की तरह, तब आपको भी रुपया गिराना पड़ेगा, और वो तो होगा ही। तो रुपया यहाँ से नीचे जाएगा, बट वो एफआईज उसको हेज करके आते हैं, वो सोच के आते हैं 2-3% साल का डिप्रिसिएशन है, आपको रिटर्न देना है। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, तो पैसा निकलने लगा, और उस वक्त निकला जबकि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के अमेरिका में जा रहा था। पिछले साल $450 बिलियन गया अमेरिकन स्टॉक फंड्स में और स्टॉक मार्केट में, और इस साल ऑलरेडी 150 बिलियन पहले 40 दिनों में ही चला गया। नेहा जी जी, पॉइंट वैलिड है सर। और इसी बीच हमने देखा कि एज वाज एक्सपेक्टेड पॉलिसी के बाद बाजार में एक दायरेबंद ट्रेड देखने को मिला, एक स्पाइक जरूर आया, उसके बाद नीचे और फिर से रिकवरी का प्रयास हमने देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी में होता हुआ। फिलहाल 180 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, 50,200 के पास अपने आप को होल्ड आउट करता हुआ, और निफ्टी पर भी नजर डालिए, 25 पॉइंट की कमजोरी इस समय दिख रही है। 23,500 से 600 के बीच में अपने आप को टिकाए हुए इस समय निफ्टी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ हम अपने सारे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। अजय भगत सर, थैंक यू सो मच इस महत्वपूर्ण दिन पर, अवसर पर आने के लिए। हमारे साथ गुरमीत चड्ढा
मेहता सर, थैंक यू सो मच आपकी भी बहुमूल्य राय के लिए। जोशी सर, आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जाजू सर, थैंक यू सो मच पूरी एनालिसिस करके दर्शकों के सामने बड़े सरल भाषा में रखने के लिए। साथ ही वागले सर, पालविया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बाजार के इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए, हम शो का यही समापन करेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।